हेलो, माय नेम इज़ किरण बोध एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सैलून में लंबे बालों को कैसे धोया जाता है ये बताऊंगी। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट का स्कैल्प टाइप देखना है कि वो ऑयली, ड्राई या डैंड्रफ वाला है। उसी के अकॉर्डिंग आप शैम्पू चूज़ करना। एंड मेरे बाल तो ऑयली एंड डैंड्रफ वाला है, तो मैं मैट्रिक्स बायोलेज एडवांस शैम्पू यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, इससे आपके डैंड्रफ बहुत जल्दी कम हो जाएंगे। साथ में मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आफ्टर शैम्पू आपको कंडीशनर कैसे यूज़ करना है ये मैं वीडियो में आगे बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्लाइंट के हेड को शैम्पू स्टेशन पे एडजस्ट करें। उसके बाद आप पानी के प्रेशर को चेक करें। अगर आप बिगनर हो तो ध्यान रखें कि आप मीडियम प्रेशर पे हेड वॉश करें, और अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो आप खुद से ही प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हो, पर मैं हमेशा से मीडियम प्रेशर पे ही हेड वॉश करवाती हूँ। इससे ऐसा होता है कि आपके बाल कम टूटते हैं और आपको रिलैक्सिंग भी फील होता है। तो जब बाल अच्छे से गीले हो जाएं, आपको शैम्पू लेना है और उस शैम्पू को कम क्वांटिटी में अपने हाथों में लेके अच्छे से मिलाना है। जब उसमें झाग निकल आए तो आप उसे अपने स्कैल्प पे लगाएं। उसे स्कैल्प में लगाने के बाद अच्छे से आपको रगड़ना है, ताकि आपके बालों से डर्ट, पॉल्यूशन और डैंड्रफ और ऑयलीनेस सब निकल जाए।